वेलकम टू जेनिथ कोचिंग क्लास। जेनिथ कोचिंग क्लास में आप लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? अच्छे है ना? मैं भी अच्छी हूँ। आईपीएल देख रहे हैं ना आप लोग? देखना ही चाहिए क्योंकि आप लोगों को क्रिकेट बहुत पसंद है, मुझे पता है। और जितना सारे टीम्स है, किसी न किसी ने भी आप लोगों का फेवरेट क्रिकेटर रहते हैं। कहीं में भी आंद्रे रसल, कहीं में भी शमी, कहीं में भी विराट कोहली। तो आप लोगों को तो बहुत पसंद है। और आप लोगों को ये भी पसंद है, क्या बोलते हैं, फ्री फायर। आप लोग खेलते हैं ना? मुझे तो ऐसा नहीं पता, लेकिन मैं आप लोग के पास में हमेशा सुनती हूँ फ्री फायर फ्री फायर। पहले क्या था, पबजी। अब तो पबजी बैन हो गया, लेकिन आप लोग इतना बिजी रहते हैं ये फ्री फायर खेलने के लिए। खेलिए, लेकिन बात क्या होता है, पढ़ाई भी तो करना है। अब तो आप लोगों का एग्जाम चल रहा है ना, ऑनलाइन एग्जाम चल रहा है ना, हाफ ईयरली। सो एग्जाम पर पढ़ाई भी कीजिए, फ्री फायर भी खेलिए। क्या करें, बाहर में तो क्रिकेट या फुटबॉल खेलने के लिए आप लोग नहीं चल पाते हैं आजकल। बाहर में तो जाना माना है, और मम्मी लोग तो कहते बेटा या घर से मत जाओ। सिर्फ बेटा नहीं, बेटी भी है, लेकिन उन लोगों को भी घर से जाने बाहर जाने के लिए मम्मी नहीं कहती है, क्योंकि पैंडेमिक सिचुएशन में कौन कहेगा कि आप लोग घर बाहर जाओ। ये तो नहीं हो सकता है, इसलिए पबजी खेलना तो बंद हो गया। अब फ्री फायर और क्या कहता है, कैंडी फ्लॉक्स, मुझे ऐसा नहीं पता, लेकिन आप लोग को तो मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, तो वो तो खेलना ही चाहिए। देखिए, 24 आवर्स इन ए डे इज वेरी लॉन्ग स्पैन। सो इतना टाइम पे आप लोग को 8 आवर्स सोना भी है, लेकिन आप लोग 8 आवर्स सोते नहीं। मैं जानती हूँ रात भर आप लोग ऑनलाइन में रहता है, ये बात अच्छा नहीं है। दिन में ऑनलाइन में पढ़ाई करें तो रात में फ्री फायर खेले, तो ये प्रेशर हो जाता है ना आंखों पर, दैट इज ब्रेन पर। सो सोच समझ के खेलिए। ओके, खेलना भी चाहिए और आंखों को रेस्ट भी देना चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का स्टार्टिंग। ओके, सो आप लोगों को क्या करना चाहिए, मेरा वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड को शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिए। कमेंट करना चाहिए, तब तो मैं आप लोगों को अच्छी तरह से सिखा सकती हूँ। ओके, और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो जो बोलना था पहले वो मैं भूल चुकी हूँ। सो लेट्स स्टार्ट टुडे। हाँ चिल्ड्रेन, योर क्लास 8 का बच्चे लोग मुझे बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हम लोग को एल्जेब्रिकल आइडेंटिटी सिखाइए। वो मुझे टफ लग रहा है, वो हमें टफ लग रहा है। ठीक है, मैं वो सिखाऊंगी, लेकिन पहले बोर्ड का एग्जाम के लिए थोड़ा प्रिपेयर कर दे क्लास 10 को। सो देन आप लोगों का 8 का एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, दैट इज डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएबल, ये सब सिखा दूंगी। और क्या कहते हैं, आप लोग रेशनल नंबर भी सीखना चाहते हैं। क्लास 7 कह रहे हैं मैम आप लोगों तो हम लोग को देखते ही नहीं है, तो हमें भी पढ़ाइए थोड़ा। तो जरूर आप लोग को पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो जरूर आपको लेके आपके लिए क्लास होंगे, लेकिन पहले मैं क्लास 10 को थोड़ा आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करती हूँ। ठीक है, ओके, सो थोड़ा वेट कीजिए, तो मैं ये सिखाऊंगी जरूर नेक्स्ट क्लास में। सो चले, आज मैं जो सिखाने जा रही हूँ वो होता है हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्री में मैं आप लोगों को क्या सिखाई थी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, देन स्टैंडर्ड एंगल्स। नाउ इट इज अ चैप्टर ऑफ हाइट्स एंड डिस्टेंस। सो हाइट्स एंड डिस्टेंस का बेस क्या होता है, ये देखिए मैं ड्राइंग की है, ओ ए ओ पी बी। ओके, here are the two angles. This is the angle and there is an angle. Okay, it's called angle of elevation. Angle of elevation and there is angle of depression. मतलब यहां से देखा जाए, ओ से देखा जाए ऊपर में, तो ये होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंड जब ऊपर से देखा जाए नीचे, तब वो होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। न्यूमेरिकली एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ये इक्वल है। जैसे यहाँ में भी 60 डिग्री हो सकता है, वहां में भी 60 डिग्री हो सकता है, यहाँ में भी 30 डिग्री हो सकता है, वहां में भी 30 डिग्री हो सकता है। और ये होता है लाइन ऑफ साइट, हम लोग कैसे देखें। ओके, सो from here if I see, then it is called angle of elevation, and from there if you see, that is called angle of depression. Numerically is the same, so it is angle of elevation, it is angle of depression. Repeatedly I am telling you. Okay, so this is a basic feature
of heights and distances. So that is the first question. From a point P on level ground, the angle of elevation of the top of a tower is 60 degree. Angle of elevation means this is 60 degree. Okay. The tower is 200 meter high. Find how far is P from the foot of the tower. So let it be a tower. This is a diagram of it. So it is the tower, I think, and it is P. Okay. And angle of elevation is 60 degree. So height is 200 degree. Base we don't know, and here is, and it is 90 degree. You know, this is a right angle triangle. Okay. So it is hypotenuse. Now here is 60 degree. So what I taught you in the previous classes, that where theta is attached, that is the base. So here it is the base. Now height is 200 meter. So what we will take? The sine theta, cos theta, tan theta. It is tan theta because we are telling about height and base. And you know tan theta equals to height by base. You know tan theta equals to height by base. So here is the formula of that is tan theta. So in triangle PQR, height of the tower. So height of the tower, I am writing only height. Height equals to 200 meter. Angle of elevation. Angle of elevation. ELEVATION. Okay. Angle of elevation equals to 60 degree. So I am asking about PQ. How far at the foot of the tower to the point P. So RQ by PQ. RQ by PQ. That is height by base equals to tan 60 degree. What is the value of tan 60 degree? You know, tan 60 degree is root 3. So RQ, that is 200. 200 by PQ equals to root 3. Now मेरा वीडियो को लाइक कीजिए, मुझे थोड़ा मोटिवेट कीजिए कि मैं आप लोगों को अच्छी तरह से सिखा सकूं. ओके. सो 200 by PQ equals to root 3. So PQ that is root 3 PQ. Root 3 PQ equals to 200. So now PQ equals to 200 by root 3, but you cannot put it that is 200 by root 3. You have to rationalize the number. You know how to rationalize the number? Then at the denominator you cannot write any irrational number. So please multiply root 3 by root 3 again. So in the numerator you will multiply this numerator root 3 also, because if you put the root 3 here at the denominator, whatever you put in the denominator multiply by root 3, that is you have to put the root 3 in the numerator also. So root 3 multiplied by root 3 equals to 3. Therefore it is 200 root 3 by 3. So now calculate what is the answer here. So 200 by 3 and 200 root 3 by 3, that is the value is, what is the value of root 3? 1.732. So 200 multiplied by 1.732 by 3 meter. Whatever the answer, you will write it. Okay, calculation is up to you. अच्छा, तो क्या करते हैं ना, ऐसे सिखाते हैं आप लोग को ट्रिग्नोमेट्री के हाइट एंड डिस्टेंस. ये आप लोग को ऐसे सीखना है. हाइट इधर में जो डिस्टेंस बोला है, ये बोला है PQ. सो ऐसे किया जाए कि tan थीटा लिया जाए, तो क्या कर सकता है, हाइट बाय बेस इक्वल्स टू tan theta. So here is tan 60 degree or tan 45 degree, tan 30 degree, whatever it may be, you have to write like this. Okay, understood? So let's observe the sum. We'll go to the next sum. So children, come to the next sum, that is question number 2. Such a big question. No,
here is question is very long, but answer is very short. Okay, so let's see the sum. A circus artist is climbing a 20-meter long rope. And circus देखे हैं ना आप लोग? देखे हैं? आजकल तो ज्यादा से ज्यादा सर्कस नहीं देखते हैं, बहुत ही कमती हो गया. एंड सर्कस का मेन अट्रैक्शन क्या था हम लोग के लिए कि एनिमल्स, दैट इज एलिफेंट को कैसे ट्रेन किया जाए, दैट इज पैरट को कैसे ट्रेन किया जाए, एंड दैट इज लायन. वो जो रिंग ऑफ फायर होता है ना, उसके अंदर से जब ट्रेनर उन लोग को ऐसे हुई लगाते तो क्या करते हैं ना, वो लोग ऐसे उधर से जाते हैं वो रिंग ऑफ फायर से. वो तो होना नहीं चाहिए ना, उन लोगों को ऐसे टेम करके ऐसे ट्रेन करना नहीं चाहिए. हाँ, उन लोगों को फॉरेस्ट में जंगल में ही अच्छा दिखते हैं. ठीक है, इसलिए वो बैन हो गया. तो आजकल क्या करते हैं, ट्रैपिस का खेला दिखाते हैं, दूसरा कुछ एक्रोबैट्स का खेला होता है, दैट इज क्लाउन का जोक्स होता है, लेकिन आजकल एनिमल्स को यूज नहीं किया जाता है. सो लेट्स, तो a circus artist is climbing a 20-meter long rope and tied from the, एकदम टाइटली टाइट किया है, क्या है ना, टाइटली टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल. हमें एक वर्टिकल पोल रहते हैं, वो हमें एकदम जैसे 90 डिग्री. सो इसके साथ ये टाइट किया जाता है. जब टाइट किया जाता है तो ग्राउंड के साथ वो कितना डिग्री बनाता है एंगल ना, 30 डिग्री. दैट इज वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. So क्या बोला है कि if the angle made by 30 degree होता है तो find the height of the pole. So you have asked for AB. So here is the diagram here. ABC is a triangle. So in triangle ABC, so AB is 20 मीटर. दैट इज यहाँ से क्या करता है, इतना दूर तक क्या इसको टाइटली स्ट्रेच करता है. सो इट इज नॉट द पोल, इट इज नॉट द बेस, इट इज द hypotenuse. Okay, so I didn't tell about height and base, I told about hypotenuse. So here is, you will take that sin theta. So it is sin 30 degree. You know sin 30 degree? Wow, sin 30 degree, find the value of sin 30 degree. Sin 30 degree is 1 by 2, half. Okay, so in triangle, now let's see the solution. In triangle ABC, okay, AC is 20 meter. So I am not writing here. No, AC is 20 meter. Angle C equals to 30 degree. I am not writing, but you will write in the exam, please. Okay, so AB by, I am asking for AB. So AB by AC. AB by AC. That is height by hypotenuse equals to, so what I have to write? Na sin 30 degree, because sin theta equals to height by hypotenuse. So AB by AC. So AC is what? AC is 20. So AB by 20 equals to 1 by 2. Implies that AB equals to 20 into 1 by 2. So cut, here is 10. Therefore AB equals to 10. So here the height is 10 meter. Don't forget to put the unit, otherwise marks will be deducted. So lengthy question and this shows short the answer is. So that is, you will take, that is sin 30. Why I will take sin 30? Because here is not telling about base and height. If there is base and height, you will take, obviously you will take tan theta. And here is, in case of hypotenuse, you will take sin theta. Okay, so let's observe the sum. We will go to the next sum. There is also, the question is so lengthy, but I have to write. No. Okay, let's observe. So children, come to the next sum. So such a lengthy sum again, but again I am telling you that this question is lengthy, but answer is not so lengthy. Okay, and answer is very easy. Just you have to guess that is sin theta or tan theta, and so. Okay, now let's read the question first. A tree is 12 meter high, is broken by the wind in such a way that its top touches the ground and
I have written and this twice. And makes an angle 60 degree with the ground. At what height from the bottom the tree is broken? Okay, so the tree is 12 meter high. Here is the diagram. The tree is 12 meter high. BA. Okay, 12 meter high. Let's say that is from the height of x, that is C. AC, we have let it x. That height of x, it has been broken. So now the total height is 12 meter. So after x meter, it is broken. So now that is broken part is here touches the ground. Okay. So it is 12 minus x. Then it is also 12 minus x. And the angle is 60 degree. So what I will take, tan theta or sin theta? It is tan theta or sin theta. Sin theta. Because here is telling about height and hypotenuse. Understood? So it is telling about height and hypotenuse. So we will take sin theta. At first, what is given you have to write. AB. AB equals to 12 meter. Let AC equals to x meter. That is from where the tree has been broken. Okay. Now, therefore, BC equals to 12 minus x meter. According to the problem, OC is also 12 minus x meter. Therefore, it implies that OC is also 12 minus x meter. Why? Because from here it has broken and the broken part is touches the ground here. So this part is touches the ground here. Okay. So BC equals to OC. Therefore BC equals to 12 minus x meter. That is OC also 12 minus x meter. And angle of elevation is here 60 degree. Touches the ground, that is 60 degree. So now you will take sin theta. Therefore CA by CO equals to CA means x and CO means 12 minus x. I am rubbing the question, okay? Otherwise there is no space to write. प्लीज मेरा वीडियो को लाइक कीजिए, मुझे सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि मैं आप लोगों को अच्छी तरह से सम सिखा सकूं. ओके, आई एम टेलिंग यू रिपीटेडली. नो, लेट्स सी द सम. So CA by CO equals to x by 12 minus x. That is implies that from here to we are going here. So CA means x. X by CO means 12 minus CO means x and OC means 12 minus x equals to sin 60 degree. Okay, sin 60 degree. Then what is the value of sin 60 degree? Sin 60 degree equals to root over 3 by 2. So x by 12 minus x equals to root 3 by 2. That is implies that 2 multiplied by x equals to root 3 multiplied by 12 minus x. Now 2x equals to 12 root 3 minus root 3x. That is 2x plus root 3x equals to 12 root 3. X is common. X is common here. So x, that is 2 plus root 3 equals to 12 root 3. That is x is equals to 12 root 3 by 2 plus root 3. You have to rationalize the number. So I am writing here 2 minus root 3.
So you have to write x equals to, here is 2a plus b into a minus b, that is the denominator here. A plus b into a minus b, that is a square minus b square. So a square means 2 square, minus b square means root 3 square, that is 2 square is 4 and root 3 square is 3, that is 4 minus 3 equals to 1. So I am not writing the denominator here now because denominator is 1. You have learned that is rationalizing the sum in the class chapter, that is previous class, in class 9. So I am not writing here. Then 12 root 3 into 2 minus 12 root 3 into 3, that is 12 root 3 into 2, that is 24 root 3 minus 12 root 3 into root 3. Root 3 multiplied by root 3 is 3. So 3 into 12, that is 36. So minus 36. That is the value equals to, I am not calculating here, I have calculated previously, that is 5.569. So x is 5.569. So x is what? That is the height of AC from where, that is the tree has broken. Okay, so here is x is 5.569. So you have to write the put the unit, that is meter. It is 5. I cannot write here because I am solving x. So x equals to 5.569. I cannot write the unit here. And when you will write the answer, then you will write it that 5.569 meter. You can approximation, by approximation you can write 5.57. Okay, that is you also write. So understood the sum? This is not so tough sum, you know. You will tell that again. You repeatedly tell that is not a tough sum, but it is not so easy also. You have to just learn. You have to just concept that how it is possible to do this sum. When you will take the sine theta or when you will take the tan theta. Okay. Again and again I am telling you, when I will deal about height and base, we will take tan theta, and when you will deal about height and hypotenuse, then you will take sine theta. So let's observe the sum. We will go to the next sum. That is also a lengthy question. Okay. So children, come to the next sum. That is question number 4. Here I have drawn a picture. No, that is there is a river, and across the river there is a bridge. That is 150 meter long. And here's the angle is 45 degree. The base is across such a way that is angle is formed. Angle is, that is 45 degree. So in triangle ABC, AB is the base because theta is attached to AB. And where theta is attached, that is the base. We consider it. So again and again I am telling you. Repeatedly I am telling you that is theta is attached that line with that line, that is base. And other line is BC, that is height. So AC is the hypotenuse here. So again it is the case of sine theta. Then in triangle ABC, AC equals to, AC is the bridge, AC equals to 150 meter. Here theta equals to 45 degree. So sine theta equals to sine 45 degree. Sine 45 degree equals to value is what? Sine 45 degree equals to 1 by root 2. Therefore, BC by AC, that is height by hypotenuse, equals to sine 45 degree. That is BC by AC means 150 equal to sine 45 degree, that is 1 by root 2. That is BC equals to 150 by root 2. Again you have to rationalize the number. Root 2 multiplied by root 2, that is in the numerator also root 2. That is BC equals to 150 root 2 by 2. That is cut with 2, 150, that is 75. Therefore, BC equals to 75 root 2. I am not writing the unit here, but and the answer you have to writing the unit meter.
you can leave it the answer 75 root 2, or you have to write the answer 75. What is the value of root 2? 1.414. Okay, so please multiply 1.414 by 75. Whatever the calculation, that is meter. So BC, that is depth of the river, is 175 multiplied by 1.414 meter. Tough sum. So please let's understand the sum. I am writing the fifth question. Okay. So children, come to the next sum. That is the fifth sum. The shadow of a vertical tower on ground increases by 10 meter when the altitude of the sun changes from an angle of elevation 45 degree to 30 degree. Find the height of the tower and correct to the one place of decimal. So first see the diagram, then you will understand the sum. So the sun is there, that is B. Okay. Then this is the height AB, and when the angle of elevation is 45 degree, so the triangle is ABC, and when the angle is 30 degree, then the triangle is ABD. Whenever the angle is increases, that go into the vertical side. No, that is if there is 60 degree, so you have to write here, and there is 15 degree, you will write here. So increase to decrease order here. Okay, so tan 45 degree, sine 45 degree, that is you are writing here. So 60 degree you are writing here, close to the vertical point. Okay, and then when it's 15 degree, so you will get again further from the vertical angle. Okay, so now when the sun is that is 45 degrees on here and 30 degrees here, then CA equals to, I don't know, so it is, I consider that is x meter, and from DC when it was 45 degree, then that is formed 30 degree, so it is 10 meter away from C, that is DC equals to 10 meter, and we don't know the height, so we consider that the height is h meter. So let's start the sum. The shadow of a vertical tower on the ground, that is increases by 10 meter. First let's observe the triangle ABC. In triangle ABC, now it is height and base. We are dealing about height and base, so no hypotenuse is there. Okay, so we are dealing about height by base. So here BC, AB by AC, AB by AC, that is height by base, equals to tan 45 degree. So height by base, that is h by x equals to 1. Tan 45 degree is 1, that is h equals to x. So base and height is the same. Now in triangle BDA or ABD, in triangle ABD. Okay, so that's also height and base because no hypotenuse is there. So AB by AD equals to tan 30 degree. You know the value of tan 30 degree, that is 1 by root 3. So AB is h, and AD, and AD is 10 plus x. AD is 10 plus x equals to 1 by root 3. Now we can substitute the value of h, that is x. So x by, but in the question what, that is find the height of the tower. So we'll write h here and remove x here. No, because in the question asked for height, not for base. So h by 10 plus h, because h equals to x, so at the place of x we can write h equals to 1 by root 3. I am grabbing the question here. No, otherwise there is no space to write here. So please like my video again and again, I am telling you, and to share to your friends
and please comment me in your comment box and please subscribe the channel by pressing the bell icon. Okay, so I can teach you by heart. Please support me. So here is the remaining sum. So h by 10 plus h equals to 1 by root 3. Now you can write here, that is cross multiplication, root 3h equals to 10 plus h. 10 plus h, that is, take the h here, root 3h minus h equals to 10. Okay, so h is common, that is root 3 minus 1 equals to 10, that is h equals to 10 by root 3 minus 1. आप लोग को क्लास बोर लग रहा है क्या, अच्छा लग रहा है? मुझे तो नहीं पता, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में तो आमना सामना नहीं होता है, इसलिए मुझे तो पता नहीं होता है. So we are writing here 10 by root 3 minus 1, that is root 3 means okay, first we will rationalize the number. Root 3 minus 1 multiplied by root 3 plus 1. Here we will also write root 3 plus 1. Okay, so root 3 minus 1 root 3, that is root 3 square. Root 3 square, that is 3 minus 1 square is 1. So 3 minus 1, that is 2. So 10 multiplied by root 3 plus 1 by 2. I didn't show the calculation here. Okay, so it is 5. Therefore 5 root 3 plus 1, that is root 3 means 1.732 plus 1, that is 5 multiplied by 2.732, that is 13.65 approximately. Okay, so here is the height. So height is 13.65 meter. Okay, so you have to write here meter. So height is 13.65 meter. Understood the sum? Okay, let's see. प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आप लोग ये समझते हैं कि नहीं. अगर नहीं समझते हैं तो मैं फिर अच्छी तरह से समझाऊंगी. ओके, so you have to obtain good marks in the coming examination. So आज के लिए क्लास कंप्लीट करते हैं, लेकिन ये चैप्टर बहुत ही लेंदी है, डिफरेंट सम्स है. इसके लिए मैं क्या करूंगी, मैं दूसरा क्लास में, नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को फिर से समझाऊंगी. क्वेश्चन बहुत लेंदी है, मेरा हाथ बहुत दुखता है, तो इसलिए मैं आज और नहीं लिख सकती. ठीक है, नेक्स्ट डे में मैं आप लोगों को अच्छी तरह से फिर से डिफरेंट सम सिखाऊंगी. उसका पहले हम लोग मैं आपसे ये उम्मीद कर सकती हूँ कि आप लोग प्लीज कमेंट कीजिए कि मैम मुझे ये सिखाइए, मैम मुझे ये सम थोड़ा आपसे मतलब सीखना है. तो मैं ये जानने के बाद मैं ये क्या करूंगी, मैं उस सम में मैं कंसंट्रेट करूंगी. ठीक है, अगर आप लोग नहीं कहते हैं मुझे, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि क्या सिखाना चाहिए. Okay, so please support me and subscribe my channel and like my video. Okay, and share to your friends. So सब लोग मुझे देख सके और मुझे पूछते हैं कि मैम आपको ये कराना चाहिए, आप ऐसा कीजिए, मुझे ये सिखाइए, तब मुझे ना सपोर्ट मिलेगा. आई विल मोटिवेटेड टू टीच यू अ लॉट. ओके, सो आज मैं चलती हूँ. ठीक है, आज के लिए गुड नाइट. नेक्स्ट डे आप लोग को मैं इसका दूसरा पार्ट सिखाऊंगी. तब तक के लिए आप लोग थोड़ा सा IPL देख ले, मैं चलती. ओके, बाय.